Hey, what's up? How's everybody doing? I hope you guys are doing really well. It's another day. It's a very fresh vlog from Yalbong. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि येलबोंग कहाँ पर है? Well, it is in the district of Kalimpong of state West Bengal. एंड कल मैं यहाँ पर आया था लेकिन मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। यहाँ पर पहुँचने में बहुत ही मतलब चैलेंज है, यहाँ पे चैलेंजिंग है यहाँ पर पहुँचना, तो मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया। तो just trying to share some moments and share my travel stories. So let me show you around. I'll be here for like 2 days and I'm really having a good stay over here, and the vibe is really peaceful. It's a very cozy, it's a very peaceful village, not much of crowd, not much of population, and yeah, it's amazing. So I'll just show you where I'm staying currently. So I'm staying at a place called Saran Homestay at Yalbong. So let me show you. So it's an offbeat destination. So let me show you the surrounding of this place. So lots of flowers blooming. It's called Agelia. So yeah, you see the flowers. It's really colorful. The colors are fresh, very deep in color. So this is just an open space. You can see over here and you enjoy your coffee. I really love how they put up all the flowers in a very organized and very beautiful manner. So yeah, this is a signboard. You can see it's Saran Homestay, Yalbong, Kalimpong. You can contact this number if you want. So let me show you my room. So it's all messed up, but just try to ignore all the messy things around. So बहुत ही बड़ा room है, spacious है, So this is the bathroom. It's neat and clean. I don't want to show much of bathroom over here. Please remove sleepers outside and meal time, breakfast, lunch, dinner. यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, तो टाइम के हिसाब से आपको meals भी मिल जाएंगे. So let me show you around. So this is a kitchen and auntie is preparing some breakfast over here. So let me show you what she is preparing for the breakfast. Good morning auntie. Good morning sir. आप क्या बना रहे हो? रोटी बना रही हूँ. रोटी. ओके. Breakfast. रोटी बना रही है. अभी लाइट है कि नहीं है? लाइट है. अच्छा. तो ये रोटी बना रहे हैं हमारे आंटी. तो विद पोटैटो या पोटैटो फ्राई. देखो रोटी गर्मा गर्म बना रहे हैं. और ये किचन है, बहुत ही प्यारा किचन है. एंड कैन सिट डाउन हियर एंड एंजॉय योर टी एंड योर कॉफ़ी एज वेल. सो या, ये पत्ता का नाम क्या बोला आपने? नेबारा लीफ है ये. It's just like a plate, the size of the plate is such a huge. See this? So we are going to have breakfast over here with this Nevada plate, and guide is also ready. प्लेट बना रही हूँ. Okay. So ये स्टिक से आप बनाइए ना, दिखाइए. बनाइए. मक्के को बना चाहिए. फाइनली हो गया ये हो गया. प्लेट. तो अभी इसमें क्या करेंगे? खाना. और लंच खाते हैं. अच्छा. खास. तो इसमें हम लोग खाएंगे वहाँ पे रिवर कैनियन के बाद, और मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगा. सो इन ब्रेकफास्ट आई हैव रोटी. आई हैव 4 रोटीज एंड 1 अंडा, देन चना, एंड विद दिस हॉट मिल्क टी. चलो चलते आपको दिखाते हैं. तो सीढ़ियाँ यहाँ पर बहुत ही स्टीप है. देखो, again you can see with lots and lots of colors over here. Yes, the sun is up here. It's shining bright and you can see the nature is all green around. बहुत ही हरियाली है यहाँ पर. So ये मेरे होम स्टे के ठीक ऊपर टेरेस से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ. So काफ़ी खूबसूरत फूल है यहाँ पे, चारों तरफ फूल ही फूल है. So yes, you can see
It's lovely environment here. हाँ, अच्छा है ना? ठीक। तो वहाँ पर आंटी जा रही है देखो, और मैं अभी ऊपर हूँ. And lots very colorful flowers over here. The environment is so peaceful. It's very airy. You can see this Buddhist flags over here and see the mountains. The outline of the mountains is so huge, and it's really green all around. So if you are a true nature lover and adventure lover, then this place is a must. तो यहाँ से चल के आए थे कल हम लोग. सो ये जो रास्ते हैं देखो. So just taking a walk around this village. So I can see a small shop or maybe cafe. This so Yalbong Tamang shop. So यहाँ पे so you can see small shops over here. Tiny shop. It's all open. You can see here, and some sitting arrangements just to have your coffee, lunch or dinner maybe. So just trying to see what's available here in the shop. So look at it, just nearby my homestay, and just sit and enjoy. वॉक करते करते मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ. देखो यहाँ पे एक ग्राउंड है. आई थिंक खेल के मैदान है शायद यहाँ पर. आई थिंक यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे गांव के लोग. सो बड़े बड़े चट्टाने हैं यहाँ पर. देखो बड़े बड़े पत्थर और रॉक्स अराउंड हियर. काफ़ी सारे घर भी है वहाँ पर. बहुत ही शांत है. लोग कम है यहाँ पर, गाड़ियाँ कम है, तो काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पर. I'm just loving the peace and silence over here. You can hear the bird chirping on top of this tree. See, can you listen carefully? Oh God, this is such a beautiful bird. See this place, all rocks around, and you can see here a small playground over here of Yalbong village, and you can see the mountains over here. The outline of the mountain is such a beautiful sight. With my own eyes, I can witness this pure raw nature, see the greenery, and it's such a beautiful and peaceful vibe over here. No one around, it's just me and the nature, and hear the bird chirping. Taking a small stroll around this village. So walk tour बना रहा हूँ आप सबके लिए. I'm very far away from the camera, and I'm vlogging after a very long time, so I'm not able to vlog properly, struggling with the words and vocabs. But yeah, it's gonna be a good day. So I finally reached my homestay, and I'll be taking some rest. So I'll be getting ready for my canyon trek. It's gonna be an awesome day as well.